Bismillahirrahmanirrahim. Theory of Automated and Formal Languages. This is your lesson number 2. In this lesson, we are going to learn about defining languages. I'm your teacher, Dr. Usman Jamil. In defining languages, languages can be defined in different ways that we can be used or as follows: descriptive definition, recursive definition using regular expression, using finite automation. In descriptive definition of languages, the language is defined by describing the conditions it imposes on its words, that which type of language we want to make. For example, language of all positive numbers, languages of all negative numbers, language of even number, languages starting with letter A. This is all about descriptive definition of a language. For example, the language L of strings of odd length defined over the alphabet A. अब हमने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ होगा, दैट इज़ ए, और वो लैंग्वेज जो होगी उसमें सिर्फ वो स्ट्रिंग्स आएंगी जिनकी लेंथ अगर कैलकुलेट की जाए तो वो ऑड होगी. ऑड लेंथ से मुराद ये है कि वर्ड्स ऑफ 1, 3, 5, 7, and so on. These lines, words will be included in this language. So here we are having the sigma, that is alphabet, is equals to A, and the language will be A, triple A, 5As, and so on. Now we will call them the words because they are associated with the specific sort of language. In the second example, for example, we want to have the language L of strings that does not start with A. अब हमने क्या करना है, over the alphabet A B C. अब उसमें जो allowed letters होंगे वो A B C होंगे, और इसमें वो सब words आएंगे जो कि किससे स्टार्ट नहीं होंगे, A से. अब हम बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, लेकिन ए से स्टार्ट नहीं करेंगे. ए स्टार्टिंग पोजीशन से हट के किसी और पोजीशन पे एग्जिस्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल, we will have the words B, C, B, A because it is not starting with A. B, 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 C, C, A, and so on. In this third example, the language L of strings of length 2 defined over alphabet 0, 1, 2. अब इसमें क्या होगा कि कितनी लेंथ के वर्ड्स आएंगे, लेंथ 2 के वर्ड्स आएंगे. अब इस लैंग्वेज को हम इनफाइनाइट लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि इनफाइनाइट लैंग्वेज वो होती है जिसमें वर्ड्स जनरेट होते चले जाए और उनका कोई एंड ना हो. अब हमने चूंकि स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें जो वर्ड्स चाहिए उनकी लैंग्वेज लेंथ की वर्ड्स जो हैं स्ट्रिंग्स होंगी उनकी सिर्फ 2 लेंथ के वर्ड्स चाहिए. अब क्या होगा, और होने भी 0, 1, 2 में से चाहिए, तो हमारे पास ये लैंग्वेज आ जाएगी 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, and 2, 2. So this is a finite language which has the specific number of length to words. In next example, this is a language L of strings ending in 0. ये वो लैंग्वेज होगी जिसमें हमारे पास वर्ड्स जो है वो 0 से एंड होंगे. डिफाइंड ओवर द अल्फ़ाबेट सेट 0 and 1 and it will be written as. अब आपने क्या करना है कि आपके सारे वर्ड्स जो हैं वो किस पे एंड होंगे, 0 पे. ठीक हो गया. अब आपने इस पे इनफाइनाइट लैंग्वेज ये होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो है वो जनरेट किए जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो हमेशा एंड होंगे, वो सब के सब एंड हो रहे होंगे 0 पे. 0, 00, 10, 000, 010 and so on. These are the examples. So in this next example we are discussing about the language equal. So this is what we are learning. We are learning about the descriptive definition of a लैंग्वेज. अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम है कि द लैंग्वेज इक्वल. इसका मतलब है इक्वल मीन्स ऑल स्ट्रिंग्स विद इक्वल नंबर ऑफ एज to the equal number of p's defined over the alphabet A B. अब letters use होंगे A और B और इसमें जितने A आएंगे उतने B आएंगे, ठीक है. And here we are having the null string. Null string means when you are going to have a symbol with no representation. Fine. So 1A 1B equal है, 2A 2B equal है, AB में 2A's और 2B's equal है, लेकिन sequence जो है वो आगे पीछे है. So what we want equal number of A's and B's right in the string. In next example, we are having the even language. Even language of strings with even number of A's and even number of B's. Even number length वो होती है जिसमें हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8. हमारे पास जो इवन नंबर ए होंगे, इवन नंबर ऑफ बी होंगे. इसमें ऑड स्ट्रिंग लेंथ को जो है वो डिस्करेज किया है हमने, और इसमें जो यूज्ड अल्फ़ाबेट सेट है दैट इज ए बी.
Here you can see double A, even number of A's, double B, even number of B's, double 4 A's, डबल ए डबल बी, यानी आपकी अगर ए इवन लेंथ में है तो बी भी उसी इवन लेंथ में आएगा और टोटल लेंथ ऑफ द वर्ड अल्टीमेटली आपके पास इवन आ जाएगी. In the next example, we are having the language integer. This is the set of strings defined of alphabet. अब इसमें आप ये देख रहे हैं माइनस भी है क्योंकि इंटीजर्स में आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं. अब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है आपने क्या करना है कि आपने इसमें माइनस नंबर्स भी आ सकते हैं, इसमें प्लस नंबर्स भी आ सकते हैं. तो आपने एक अपने अल्फ़ाबेट में माइनस को इंट्रोड्यूस करवाया है और 0 से 9 तक बेसिक जो डिजिट्स है उनको इंट्रोड्यूस करवाया. अब उनके कॉम्बिनेशन से आपके पास -2, -1, 0 और बहुत सारे माइनस वर्ड्स और बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स दोनों सेट में जनरेट होंगे क्योंकि इंटीजर्स का मतलब क्या है, नंबर्स. सो दे कैन बी पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स. When we are talking about, here is another example, language even. अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया है, इवन 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 का मतलब क्या है कि हम ऑल एज और ऑल बीज को इवन लेंथ में चाह रहे हैं. अब लैंग्वेज इवन से मुराद क्या है, लैंग्वेज इवन ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट. इसमें नेगेटिव नंबर्स में होंगे, इसमें 0 to 9 बेसिक नंबर और पॉजिटिव नंबर में होंगे. लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उनकी लेंथ जो है वो इवन नंबर होनी चाहिए. So they will have an even length string. अच्छा, आपके पास क्या है, -4, -2, 0, 2 एंड 4. दिस इज ऑल द एग्जाम्पल्स. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि नंबर वो आएंगे कि जिसमें आपके पास लेंथ जो है वो इवन है या नंबर जो है वो बेसिकली इवन है. Like you can have, you can see here, even is equals to -4, -2, 0, 2, and 4. In this set, we are having the strings of even numbers. Another example is here, a raised to power n and b raised to power n, a and b n. These set is a set of strings that will be defined over the alphabet A, B, and n here is denoting as 1, 2, 3. Here, the number of A's will be equivalent to the number of B's, and they will be written as AB, double A, double B, triple A, triple B, 4 A's and 4 B's, etc. In this example, an important thing to note is that every word will start with A and at B, and the number of A's will be equal to the number of B's. In this subsequent example, A and B and A N, an important thing is that every word will start with A. Second, in center you will have B, and in last A. So starting with A and ending at A, and the number of A, B, A will be equal. N is equals to 1, 2, 3 because the N power will be the same for all the letters. A, B, A, length 1, double A, double B, double A, length 2, triple A, triple B, triple A, length 3, and so on. So we are actually learning the descriptive definition of languages. This is an example of language factorial of strings defined over alphabet 1, 2, 3, 4, 5. Basic digits was 1 to 9. Factorial numbers. What are the factorial numbers? In which the same number, the formula definitely will be in knowledge of all of you. Factorial number is a set of numbers in which the same number is multiplied, like 1 factorial, 1 is multiplied by 1, and 2 factorial, 1 is multiplied by 2, 3 factorial, 1 multiplied by 2 multiplied by 3, 2 ones are 2 and 2 threes are 6, and so on. So in this, what we are having the factorial numbers in this language set, we will have, if we are having the alphabet 1, 2, 3 to 9. So we are having the factorial numbers according to this particular alphabet. 1, 2, 6, 24, 120, and so on. The language factorial of strings defined over alphabet A. If we want the factorial of strings, so it will be denoted as A n factorial, and n is equals to 1 to 3. It means that first of all, n is equals to 1. The factorial of 1 is equals to 1, so a will be 1. Factorial of 2 is equals to 2. So what is that? We will have 2 a's. Factorial of 3 will, answer of factorial of 3 is 6. So we will have 6 a's. Answer of factorial of 4 is 24. So we will have next word 24 a's, and so on. So this is an important to note that the language factorial can be defined over any single letter alphabet. So we can avoid the confusion in calculating the factorial of that number.
Here is another example, the language double factorial of strings defined over alphabet A and B. Now, double factorial means that we shall calculate the factorial of a raised to power n, and factorial of b raised to power n factorial, b n factorial. So what is that? The same factorial number will be given to each letter a and b. For example, factorial 1. So 1 factorial is equals to 1. So 1a and 1b concatenated by themselves, and the answer will be ab. Factorial of 2 is 2, so double A, double B. Factorial of 3 is 6. So 6A is concatenated by 6B's, and so on, next 24 and so on. Another example is the language square of strings defined over alphabet A. It will be as A raised to power n square. अब हम क्या करने चाह रहे हैं कि हम स्क्वायर जो लैंग्वेज है वो जनरेट करें, और वो हमारे पास सिर्फ एक लेटर यूज होगा, दैट इज एन ए. अब 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, सो वी आर हैविंग 1 लेटर वर्ड ए. 2 का स्क्वायर 4 है, वी आर हैविंग सेकेंड वर्ड 4 एज, ए एन स्क्वायर. अब एन में अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एंड द थर्ड डिजिट इज 9. 4 का स्क्वायर 16, सो वी शैल हैव द नेक्स्ट वर्ड ए ऑफ लेंथ 16. द लैंग्वेज डबल स्क्वायर ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए बी. सो हमारे पास अब डबल स्क्वायर से मुराद क्या होगा? स्क्वायर ऑफ ए एंड स्क्वायर ऑफ बी. अब हमने जो एन का स्क्वायर लेना है उतने ही एज आएंगे, और जो बी का स्क्वायर लेना है, बी में एन का स्क्वायर लेना है उतने ही बीज आएंगे. अब 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ए बी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 इज कॉन्केटेनेटेड बाय 4 बी. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्टार्ट ए से होगा और एंड बी पे होगा. This is another example, the language prime of strings defined over alphabet A. Prime number वो होते हैं कि जिनका अगर हम लोग जिनको डिवाइड करना चाहें वो अपने आप से 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते. So we can have word 2, 3, length 2, length 2A, length 3A, length 5A, length 7A, and so on. So here is another important language that is known as the palindrome. Palindrome language consisting of null and the string s defined over sigma such that reverse of s is equals to s. कि जिनका अगर reverse लिया जाए तो वो भी same as original होता है. So this is a set of the words that are called palindromes, and sigma for to use is a and b. Palindrome में जो word आएंगे, it can be null, a because reverse of a is same as a, b reverse of b is same as b, and so on. All the palindrome words will be those words whose if reverse is taken, it is same as its original. So important thing is that there are as many palindromes of length 2n as there are of length 2n minus 1. To prove the above remark, we shall be noted that number of strings of length m defined over alphabet of n letters is n raised to power m. हमारे पास जितने भी वर्ड्स होंगे, ठीक है, अल्फाबेट कितने होंगे? n होंगे, और लेंथ क्या होगी? m. ये इंपॉर्टेंट है किस चीज की लर्निंग में? in the case that there are as many palindromes of length 2n as there are of length 2n minus 1. The language of strings of length 2 defined over alphabet AB is double A, AB, BA, and BB. So the number of strings is 2 raised to power 2. The language of strings of length t defined over alphabet AB is L is equals to triple A, double AB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA, triple B. The number of strings generated of length 3 and the number of alphabet letters are 2, 2 raised to power 3. आपने क्या करना है? आपके अल्फाबेट में जितने लेटर्स होंगे, ठीक है, वो आपका बेस होगा नंबर, और उसका आपका जो स्क्वायर नंबर होगा जिस पावर के साथ आपने करना है वो उसकी लेंथ होगी. अब अगर लेंथ 3 के नंबर्स आपने वर्ड्स देखने हैं और अल्फाबेट 2 है तो आपके 9 वर्ड्स, ठीक है, 2 2 2 2 आर 4, सॉरी 2 2 आर 4 4 2 आर 8, ठीक है. आपका क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का क्यूब, आपके 8 वर्ड्स जो हैं वो जनरेट किए जाएंगे. इसी तरह अगर आपके पास लेटर्स 2 हैं और आपके पास अल्फ़ाबेट लेटर्स भी 2 हैं और आपकी लेंथ भी 2 है तो आपके 4 वर्ड्स जनरेट होंगे. सो द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ m defined over alphabet of n letters is n raised to power m.
Now we are going to summing up what we have discussed today. We have discussed about the basics in first two lessons. We have discussed about null string, words, valid, invalid alphabets, length of a string, reverse of a string, defining languages, and descriptive definition of languages of equal, even, integer, even, a and b and palindrome, square, double square, etc. If there are any sort of questions, queries, you are free to ask in upcoming lessons. Fine. Till then, Allah Hafiz.